तो आप देखिए एक्स डायरेक्शन में जब चल रहे थे, बी के बाद ए आता है, फिर बी आता है, फिर ये आता है, ए बी ऐसा रिपीट हो रहा है व्हेन आई मेजर्ड इन एक्स डायरेक्शन। और व्हेन वी मेजर्ड इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन के अंदर आपको क्या मिलता है, देखिए ए मिलता है, लाइक दिस, सारे ए मिलते हैं, है ना, सारे ए मिलते हैं। तो सारे ए मिलेंगे, इसका प्रॉपर्टी का वैल्यू अलग होगा। सो हियर यू कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड हियर यू कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। ओके, सो प्रॉपर्टी से मेजर किया, कौन सा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Refractive index measured in x direction, and here refractive index measured in y direction will have the different values. Will have the different values. The reason behind that, यहाँ पे देखिए ए बी काउंटर हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ ए पार्टिकल्स काउंटर हो रहे हैं, बी पार्टिकल कहीं नहीं आ रहा है, सो 100% डिफरेंट वैल्यू होगा। सो इस सब्सटेंस का एक प्रॉपर्टी होता है, ये इस सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होता है टू चेंज द वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, टू चेंज द वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस to change the value when measured in different direction is called as anisotropy. Anisotropy. And if property remain the same, that is called as isotropy. Property measured in different direction. अब x direction में measure करो, y direction में measure करो, अगर वो property similar आता है, so that is called as isotropy. और अलग-अलग direction में अगर वो property अलग आता है, तो that is you can say anisotropy. Are we getting it? So when we have this crystalline solid or substance, in this one, any one of the property, any one of the physical property measured in different direction has the different value. So this substance has the capacity to change the value of physical property when measured in different direction. That is called as anisotropy. And if this has the capacity to have the same value in all the directions, that is called as isotropy. Are you getting it? So why this happens? मतलब अलग-अलग direction में value अलग क्यों आता है? So इसका reason क्या है? The reason is that this is the arrangement. ये जो systematic arrangement of particles है, repeating arrangement of particles है, this is the responsible thing for this arrangement of particle, and that's why we get different value. So crystalline solid के अंदर we got this property, that is anisotropy, और amorphous substances के अंदर ऐसा कोई order नहीं होता है, और ऐसा कोई order नहीं है, तो value क्या मिलेगा हम लोगों को? Similar मिलेगा, and that's why that is called isotropy. So हम ऐसा कह सकते हैं कि crystalline solids जिसके अंदर particles are arranged in a definite order has to show the anisotropy. And whereas in case of amorphous substances, particles are not arranged in definite order, they must show this isotropy. Yeah, isotropy दिखाते हैं, that is what we can say. So this is the these are the two important properties related with this one. So we have seen 4 important properties. Number 1, what is isomorphism? What is polymorphism? What is isotropy? What is anisotropy? So what is isomorphism? Whenever different substances crystallizes in the same unit cell structure or unit cell pattern are called as isomorphs. And polymorphs, single substance crystallizes into different unit cell pattern, that is called as polymorphism. What is isotropy? Whenever any physical property measured in different direction has the same value, that is isotropy, and has the different value, that is called as anisotropy. So this is shown by crystalline solids and this is shown by amorphous solids, what we can say. Clear with this? So these are the properties related with this one. Now, after saying this topic, we'll enter into the next called as crystalline solids का classification. उसके अंदर हम enter करते हैं. So let's move the classification of crystalline solids. So हम ये अच्छी तरह जानते हैं, solids are mainly classified into 2 categories: crystalline solids and amorphous solids. और इस chapter के अंदर हमें amorphous solids को discuss करने नहीं, we have to discuss the crystalline solids. So crystalline solids के types आते हैं, ठीक है? So अब देखिए बहुत बड़ा चार्ट बनता है, शायद आप बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर सबसे पहला जो टाइप होता है, दैट इज यू कैन से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरा आता है आयोनिक सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स। तीसरा आता है कोवैलेंट सॉलिड्स एंड फोर्थ आता है मेटालिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स। सो यू कैन से crystalline solids are classified into these 4 categories: metallic solids, ionic solids, covalent solids, and molecular, ionic, covalent, and metallic solids. ठीक है, इसके आधार। Now ये जो classification है crystalline solids का, ये किस आधार पर किया जाता है? मतलब on what basis this classification is done? किस आधार पर classification किया? तो उसके अंदर 2 बहुत important point आते हैं, 2 बहुत important point आते हैं। Number 1 point देखिए, that's nothing but the particle. And number 2 is nothing but the that is forces we can say, or interacting forces भी कह सकते हैं, हम लोग interacting forces भी कह सकते हैं. So you can say molecular solids, ionic solids, covalent and metallic solids. This is the classification of crystalline solids, which is due to these 2 major phenomena. There are many points related with that, but these are 2 major phenomena on what basis we classify these crystalline solids. So number 1 is, you can say, particles of which these substances are made up of, and number that is what are the interacting forces between them.
So what are the interacting forces between the particles? It depends upon that. We have these 4 categories of the different solids. Number 1, we are talking about this molecular solids. As the name suggests, molecular solids must be made up of molecules. तो इनका constituent particle जो है वो molecule है. अभी देखिए सॉलिड के अंदर लोग बार-बार पार्टिकल वर्ड यूज करेंगे. तो पार्टिकल का मतलब यहाँ पे क्या है? पार्टिकल का मतलब है यू कैन से एटम, पार्टिकल का मतलब है आयन, पार्टिकल का मतलब है मॉलिक्यूल. सो तीनों में से कुछ भी हो सकता है. पार्टिकल जब यूज करते हैं हम लोग तो पार्टिकल का मतलब एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है. तो इस तरीके से हम उसे यूज करते हैं. सो when we are talking about molecular solids has the smallest particle, constituent particle called as molecule. Ionic solid has the ion. Ionic solid has the ion. Covalent solid has the atom. Okay, has the atom. And here we have metal atom. यहाँ पर भी atom होता है, but this is metal atom. और metal atom जो होता है generally positively charged ion होता है. Positively charged ion होता है इस केस में. So this is what we have. तो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, पहले लिखता हूँ. फिर उसके बाद फोर्सेस, इंटरैक्टिंग फोर्सेस की बात करते हैं. तो इसके अंदर हमने जो 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किए थे, दैट इज नेचर ऑफ इंटरैक्टिंग फोर्सेस, कौन से होते हैं. तो उसके अंदर डाइपोल इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, लंडन फोर्सेस, ये शायद आपको याद आते होंगे. सो यू कैन से डाइपोल और डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल आयन इंटरैक्शन, ये सारे शायद याद आते होंगे. तो डाइपोल इंटरैक्शन लिखता हूं इन शॉर्ट. ओके, डाइपोल इंटरैक्शन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आयोनिक सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स के अंदर जो होता है दैट इज नथिंग बट द आयोनिक बॉन्ड. जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसके साथ दूसरा आयोनिक बॉन्ड होता है, वो यहाँ पे होता है. कोवेलेंट के अंदर जो होता है दैट इज यू कैन से कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड. और यहाँ पे जो होता है दैट इज यू कैन से मेटालिक बॉन्ड. यहाँ पे होता है मेटालिक बॉन्ड. सो दिस व्हाट वी कैन से. तो ये पॉइंट्स आते हैं. अब ये पॉइंट्स को मैं समझाता हूँ क्योंकि classification of crystalline solids is mainly based on 2 categories. Number 1, that is the particles of which these substances are made up of, and second, the nature of interacting forces between these particles. जिस particle को बना हुआ है. So when we are talking about molecular solids are the crystalline solids in which constituent particles are molecules. मतलब सबसे छोटा पार्टिकल होंगे मॉलिक्यूल होता है. इनमें एटम नहीं होता, आयन नहीं होता. सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करेंगे तो सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं होगा उस तरीके से. सो यहाँ पे मॉलिक्यूल होता है सबसे छोटा पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है. एंड इनके बीच में जो फोर्स होता है, मतलब व्हेन फर्स्ट मॉलिक्यूल इज हेल्ड टुगेदर विद सेकंड मॉलिक्यूल, हाउ दे आर हेल्ड टुगेदर. सो दिस इंटरैक्टिंग फोर्स की बात करते हैं, नेचर ऑफ इंटरैक्टिंग फोर्सेस की बात करते हैं. तो हियर सबसे पहला फोर्स होता है डाइपोल इंटरैक्शन. दूसरे फोर्स की अगर बात करते हैं आयन डाइपोल इंटरैक्शन होता है. और नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, तो उसके अंदर यू कैन से हियर इंस्टेंटेनियस फोर्सेस और लंडन फोर्सेस ऐसे यहाँ पे होते हैं. So this is what we can see here. तो ये दो चीजें इसके बारे में, that is in case of molecular solids. When we are here with ionic solids, तो ionic solids के अंदर the constituent particles of which they are made up of is nothing but the ion. वो ion के बने होते हैं. Then इनमें जो bond होता है between the interacting force between the particles is of ionic bond. और ionic bond का definition हम 11th standard में देख चुके हैं. This is the force of attraction between oppositely charged ions. So oppositely charged ions के बीच में force of attraction होता है and they are held together, and that force is called as ionic bond. So all ions are held together due to ionic bond. इसका अंदर होता है. When we are talking about covalent solids के अंदर जब बात करते हैं तो covalent solid में क्या होता है सिनेरियो? Constituent particles are atom. Covalent solid में constituent particles are atom. And when we are talking about interacting force, that is nothing but the covalent bond. So here in case of covalent solid, all particles are held together due to covalent bond. हम जानते हैं covalent bond क्या होता है? It is a force of attraction. Covalent bonds. Which is formed by mutual sharing of electrons. So when particles are held together due to mutual sharing of electrons, that is called covalent bond. That is what we are seeing. ये यहाँ पे होता है. When we are talking about metallic solids also one of the kind of crystalline solids, जिसके constituent particle होते हैं metal atom. इस दोनों में भी atom है, लेकिन फर्क है. यहाँ पे metal atoms होते हैं. और metal atom के बारे में एक खास बात की जाती है कि metal atoms generally, देखिए, M is the element, M is the metal, which loses electron to form M plus 1 electron is lost. मेटल का क्रिस्टलिटी जब तैयार होता है तो मेटल हैज द जनरल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो कैटायन तैयार करता है. ओके, ये कैटायंस तैयार करते हैं. और ये जो मेटल एटम्स होते हैं कैटायंस होते हैं. यहाँ पे हमने आयंस बोला. आयंस मतलब कैटायंस भी हो सकते हैं और एनायंस भी हो सकते हैं. सो व्हेन वी आर कॉलिंग इट एज अ आयन, इट कंप्राइजेस ऑफ कैटायंस एज वेल एज एनायंस. बट व्हेन वी आर सेइंग इट्स अ मेटल आयन, दैट हैज टू बी अ कैटायंस. उन्हें कैटायंस ऐसे कहते हैं, वो कैटायंस ही होते हैं. And that's why we are saying it's metal atom. इसलिए यहाँ पे सिर्फ metal का.
clear with this? So that is what we can. So ये उसके अंदर क्या होता है? And when we are talking about metallic bond, so metallic bond के अंदर देखिए, metallic bond एक total different type का bond होता है जो सिर्फ metal में exist करता है ना? किसी भी metal में, मतलब जो भी metal की हम बात करते हैं उसके अंदर वो exist करता है. So what is this metal? What kind of metal is this? कौन सा bond होता है उसके अंदर? हम देखेंगे तो अब देखिए, जैसा metal has the tendency to lose the electron, तो अब देखिए ना, कोई भी metal का crystal lattice बात करते हैं. So this is the crystal lattice of metal. इसके अंदर होता क्या है? So this is the M is the cation, okay? या M cation होता है. So this is M cation. M is the any metal. M is any metal. So this is cations. और यहाँ पे electrons होते हैं. So यहाँ पे electrons होते हैं. जो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए थे वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं जिन्हें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है. तो ये क्रिस्टल लैटिस के अंदर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एज कैटायंस, ओके, एंड दीस आर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच दे हैव लेफ्ट. मेटल जो छोड़ता है, जनरली मेटल हैज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. हम जानते हैं, सोडियम की बात करते हैं, पोटेशियम की बात करते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम, दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. वो इलेक्ट्रॉन यहीं पे होते हैं जो इस क्रिस्टल लैटिस पे जाते हैं. Or these electrons are delocalized. The reason behind that, we know one of the important property of metal. Metals are good conductors of heat and electricity. तो इसका कारण भी ये है कि ये जो electrons होते हैं, these electrons can carry heat and electricity from one point to another point. और इसलिए metals are good conductors of heat and electricity. So these electrons can move. ये electron यहाँ पे है तो next fraction of second में शायद वो यहाँ पे आ सकता है. यहाँ पे electron इधर जा सकता है. So electrons are moving throughout the crystal lattice. Move कर सकते हैं electrons. And that's why these electrons are called as delocalized electrons or mobile electrons. घूमने वाले. होता क्या है? ये इलेक्ट्रॉन जहां कहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का कैटायन है, ये उसे अटैच करके रखता है. इलेक्ट्रॉन जहां कहीं जाता है उसके सराउंडिंग के जितने सारे कैटायंस है उन्हें वो अटैच करके रखता है. सो ये एक नया फोर्स क्रिएट करता है. यहाँ पे जहां कहीं जाएगा वहां के सारे मेटल एटम्स वो उसके साथ अटैच करके लेगा, एक बॉन्ड बनता है. तो ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड है. दिस बॉन्ड इज द मेटालिक. So metallic bond is a force of attraction which is between mobile electron and the cations of metal within its sphere of influence. जहां कहीं वो इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां के सारे cations को वो अटैच करके रखता है. और that bond is nothing but you can say metallic bond. So when we are talking about this ionic bond, when we are talking about this covalent bond, these two bonds are totally different. Ionic bond is a force of attraction between oppositely charged metal ions. है ना, cations और anions के बीच में अगर force of attraction है, that is ionic bond. And here the force of attraction which arises due to mutual sharing of electron, that is covalent bond. And metallic bond क्या होता है? This is the force of attraction between delocalized electron and metal ion, that is cation, around it within its sphere of influence is called as a metallic bond. So metallic bond only exists in case of metal. So this is what we can say. ये सबसे main classification है solids का, molecular, ionic, covalent and metallic के अंदर, based on these two categories of based on the constant particle of which they are made up of, and number two, what is the nature of interacting forces between these particles. ठीक है, तो अभी भी बहुत सारे उसके साथ पॉइंट्स रिलेटेड है, लेकिन उसके मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, फिर उसके बाकी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करते हैं. सो आप जानते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जांपल क्या है? देयर आर मेनी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. तो जितने सारे जिसकी हम लोग बात करते हैं, SO2 की बात करते हैं, हम CO2 की बात करते हैं, CH4 की बात करते हैं. So these are the substances. Then HF की बात करते हैं. These are the substances which are called as molecular solids. when we are talking about ionic solids, NaCl, KCl, PbCl2. So most of the salts, जितने सारे salts हम जानते हैं, वो सारे salts इस category के अंदर आएंगे. That is you can say ionic solids. Covalent solid के अंदर आते हैं तो covalent solid के अंदर जैसे कि silicon, germanium, then you can say carbon. ये सारे एग्जांपल आते हैं जो कोवैलेंट सॉलिड के अंदर आते हैं. और when we are talking about metallic solids, so you can have sodium, you can have magnesium, you can iron, copper, aluminum. These are the substances which comes under the category of this metallic solids. तो ये एग्जांपल से अंदाजा आ जाता है हम लोगों कि क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. SO2, CO2, CH4, HF, HCl. These are the substances which are molecular solids. Salts, कौन से भी सॉल्ट क्यों ना, MgCl2, NaCl, KCl, PbCl2, aluminum fluoride, all these salts comes under this category of ionic solids. Silicon, germanium, carbon, ये सारे substances आते हैं covalent solids के अंदर. Whereas metallic solid की बात करते हैं तो सारे के सारे मेटल जितने हम जानते हैं वो सारे मेटल इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं. That you can say metallic solid. Okay, so now the thing is that एग्जांपल क्लियर होने के बाद उनके और भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं. मतलब दिस प्रॉपर्टी के आधार पर हम उसे क्लासिफाई करते हैं. मतलब दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बिकॉज़ ऑफ मेनी प्रॉपर्टीज.
तो क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, और प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो उसका हार्डनेस होता है, देन सॉफ्टनेस, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस दोनों पैरेलली एक साथ उसके अंदर चलेगा, आइदर इट विल बी हार्ड, आइदर इट विल बी सॉफ्ट। दूसरी बात है उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है, देन उनका हीट कंडक्टिविटी आ जाती है, उनके प्रॉपर्टीज आते हैं। सो उसमें से देखते हैं हम लोग। सो व्हाट अबाउट द मेटालिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड, सॉरी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये सारे सब्सटेंसेस की बात करें, इनका हार्डनेस सॉफ्टनेस क्या होगा, तो 100% समझते हैं हम लोग, या दीस आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर मोस्टली एक्जिस्टिंग गैसियस स्टेट, दैट मींस दे शुड बी इन सॉफ्ट फॉर्म, तो जनरली वो सॉफ्ट होते हैं। इसकी अगर बात करते हैं तो दे आर कंपैरेटिवली हार्ड, मतलब इनसे हार्ड होते हैं, बिकॉज सारे सॉल्ट्स, सॉल्ट्स को हार्ड तो नहीं कहेंगे हम लोग, बट कंपैरेटिवली उनसे हार्ड होते हैं, बिकॉज दे आर इन सॉलिड फेज। When we are talking about covalent solids, exceptionally hard होते हैं, कुछ बहुत ही हार्ड होते हैं, कुछ जस्ट हार्ड कैटेगरी में आ जाते हैं, और दे आर हार्डेस्ट और हार्ड मटेरियल, मतलब दे सिंपली हार्ड मटेरियल के अंदर आ जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम अच्छी तरह जानते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कोवेलेंट्स मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, इसके बारे में दो चीजें आती है, मे और मे नॉट बी। When we are talking about ionic solids, ionic solid के बारे में बात करते हैं तो ionic solids are non-conductor of heat and electricity in a solid phase, but when they are dissolved with the water, they become the conductor of heat and electricity. That is also very important part. And when molecular solids की बात करते हैं, they are completely non-conductor, either in the pure state or either in water. They are non-conductor. Clear with this? So that's what happens here for this. You can say molecular solids, ionic solids, and covalent solids. You can say metallic solids. That's what we can say. Now, this is the general classification of the substances. This is the general classification of the substances for this crystalline solids. But इसके अलावा when we are talking about this molecular solids, उसके और कुछ types होते हैं उसके अंदर, polar, non-polar, and hydrogen bonded substances. This is one of the important category of this molecular solids. The molecular solids can be more classified, further classified into 3 more categories. Whereas when we are talking about there are some properties, special properties of ionic solids too. Ionic solid के अपने कुछ properties होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड के अपने कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जो एक कंपैरिजन, ये जो मैंने लिखे हैं वो सारे कंपैरेटिव है, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए आसान है, इजी जाए, हाउ टू लर्न, हाउ टू रिमेंबर, हाउ टू रिकॉल, उसके लिए कंपैरेटिव है। बट इसके अलावा भी कुछ खास प्रॉपर्टी होते हैं जो अपने होते हैं उनके, एंड वो हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड के अपने कुछ प्रॉपर्टी होते हैं जो उनके होते हैं, जो दूसरे किसी इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो वो क्या है, देखिए, we are here with molecular solids. Okay, molecular solids में 3 आते हैं, that is you can say polar molecular solids, दूसरा non-polar molecular solids, और तीसरा that is hydrogen bonded molecular solids. तो molecular solid के 3 टाइप हम लोगों को मिलता है, polar molecular solids, non-polar molecular solids and hydrogen bonded molecular solids. ये आता है। अब देखिए इसके अंदर when we are talking about this polar molecular solids, तो जैसे कि polarity तो हम अच्छी तरह जानते हैं, polarity, so we can say HF is a polar molecular solid, HCl is a polar molecular solid. हमने 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया था कि होता क्या है कि when this HF is there, HF is there, hydrogen and fluorine, when we compare both of the atoms, this fluorine is more electronegative. So being it's more electronegative, it develops delta negative charge and it develops delta positive charge, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर हम डिस्कस करते हैं, तो दिस बिकम्स डेल्टा नेगेटिव चार्ज, दिस सेम बिकम्स डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और इन विच मॉलिक्यूल, जनरली हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर पोलर मॉलिक्यूल, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड polarity. One end of this molecule becomes negative charge, another end becomes positive charge. Such a molecules are called as a polar molecule. Generally, whenever bond is formed between heteroatomic molecules, दो different atom में bond बनेगा, तो उसके अंदर आपको ये polarity दिखाई देगी, polarity होती है। So such type of the molecules आते हैं, these are called polar molecules, and this is the category of molecular solids, because ये सारे soft तो होती ही होते हैं और molecule उनका base होता है, उनके बने होते हैं। When we are talking about non-polar molecules, there are many molecules which are non-polar, मतलब उसके अंदर भी polarity होती है, लेकिन that can be cancelled, और कुछ केस में होती भी नहीं है, like that. Okay, so you can have the SO2, you can have the CO2, you can have the CH4. CH4 में देखिए ना, this is you can say H, H, H or H. So though this is also a heteroatomic molecule, but polarity due to this CH bond is cancelled by this bond. So polarity here in this direction cancelled by polarity in opposite direction. ये इसके अंदर आपको मिलता है. So you can say these are the substances which are non-polar. So these are the non-polar category which is comes under this category of molecular solids. And last you can say hydrogen bonded
So ये भी हमने देखा है कि there are many substances which are hydrogen bonded. मतलब जैसे HF is also one of the example. See ammonia, see water, see alcohol. You can say CH3OH. These are the substances in which you can have this hydrogen bonding. अभी hydrogen bonding क्या होता है देखिए कि this is ammonia, this is N H H or H. Here again N H H H. होता क्या है? This is the first ammonia molecule. This is second ammonia molecule. It has this hydrogen. Or hydrogen and nitrogen has the polarity. So in order to resolve its charge, this hydrogen attacks nearest negative center. तो ये एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करता है to resolve its charge, and the bond is formed between these two, this hydrogen and nitrogen. And this bond is nothing but the hydrogen bond. So the substances like this ammonia, water, or alcohol, they have this type of bonding. That is, you can say hydrogen bonding. And because of this hydrogen bonding, all the molecules in the bulk attaches with each other. सारे molecules bulk में जो होते हैं एक दूसरे के साथ attach होते हैं और जिसके कारण सारा molecules bulk के अंदर के attach होते हैं. That's why its melting point and boiling point increases. And that's why these substances are called as hydrogen bonded molecular solids. So this is one of the important categories. In that sense, you can say here, molecular solids are mainly again classified into three categories. That is polar molecular solids in which the polarity exists, non-polar molecule in which there is a polarity, and hydrogen bonded substances in which hydrogen originates the bond and forms bond with some another molecule, nearby molecule, and this is a hydrogen bond. और ये hydrogen ही initiate करता है. The reason behind that hydrogen की जो charge है वो neutralize करने के लिए hydrogen उसके ऊपर attack करता है. That's why this bond is formed. These are the substances जिसके कारण hydrogen bonding के कारण melting point, boiling point. शायद आपने alcohol के अंदर भी देखा हुआ है. alcohol chapter के अंदर देखा अगर हुआ है आपका तो हुआ होगा देखा होगा आपने. Because of this hydrogen bonding, melting point and boiling point of the substance increases. This is. I mean, इन तीनों के अंदर अगर कंपेयर करते हैं तो these are soft substances. दोनों जरा soft substances होते हैं. This is comparatively hard. The reason where the hydrogen bonding के कारण melting point, boiling point increase हो रहा है. तो दोनों के साथ कंपेयर करेंगे तो hydrogen bonded compounds are generally hard होते हैं. इनके साथ कंपेयर करेंगे. इनके अंदर जनरल कैटेगरी सारे molecular solids soft होते हैं compared to others. But इनके अंदर जब चलते हैं तो these are the two substances comparatively softer and this is comparatively harder with that part because इनका melting point and boiling point ज़्यादा होता है ये होता है. These are the substances when dissolved into the water they can conduct the electricity. मतलब electricity conduct कर सकते हैं when they are dissolved into the water. These substances do not conduct electricity. These substances also do not conduct electricity. ये है. So this is what we can see कि उनके अंदर separations होता है for this molecular solids. Now इसी तरीके से we can have covalent solids के अंदर भी हम लोग बात कर सकते हैं कि there are some of the properties which are present here in covalent solids. ठीक है. तो let's move to the covalent solids. क्या property covalent solids के हम discuss करते हैं. Comparatively थोड़ी सी ज़्यादा मिलते हैं. Okay. Covalent solid में तीन आते हैं. You can have graphite, you can have diamond, and you can have fullerene. Okay, there are three examples. Now these are just examples. These are just examples. These are not properties of crystalline solids. मतलब गलती से कब क्या लेते हैं हम लोग? We took it as a properties of this covalent solids. No, this is not the classification of covalent solid. जिस तरीके से हमने अभी molecule का देखा था, molecular solid has the classification as like polar, non-polar, and hydrogen bond. So in that sense, here, in case of covalent solids, we don't have this type of classification. Here, in case of covalent solids, we can say there are three examples of covalent solids: graphite, diamond, and fullerene. Okay. Now, देखिए, these are the three allotropes of carbon. Carbon के ही allotropes है graphite, diamond, and fullerene. फिर भी हम जानते हैं कि there are a lot of difference between the properties of these substances. Diamond is the hardest material of the world, whereas diamond is non-conductor of electricity, whereas fullerene is a superconductor. Fullerene is used as a superconductor, and graphite is a good conductor of electricity. Graphite generally जितने सारे cells वगैरह हम use करते हैं, batteries बनाते हैं, उसके अंदर graphite use किया जाता है. So उसके केस में हम देखते हैं कि graphite is a good conductor of electricity. This is not conductor of electricity, and this is a you can say superconductor. ये superconductor करके यूज किया जाता है, मतलब बहुत ही जबरदस्त, मतलब सुपर कंप्यूटर्स वगैरह जो यूज करते हैं उसके अंदर वो यूज किया जाता है. Though they are made up of the carbons, what is difference between them? Because हमने basically देखा है कि when they crystallize in the same unit cell pattern.
वो सेम यूनिट सेल पैटर्न में क्रिस्टलाइज होते हैं. दैट इज व्हाट वी डिस्कस हियर. Now, इसके अंदर जो होता है कार्बन इज कैन से sp3 hybridized. Here you can say carbon is sp3 hybridized. Here carbon is sp2 hybridized. ये उसके अंदर सॉरी यहाँ पे sp2 आता है, sp2 sp3 and यहाँ पे भी वापस sp3 hybridization होता है. So you can say ये देखिए कार्बन का हाइब्रिडेशन जो होता है उसके अंदर का ये you can say sp2 hybridized carbon, sp3 hybridized carbon and sp2 hybridization carbon. ये उसके अंदर का मेजर डिफरेंस है when we have this one. Diamond has the properties which are called the glittering properties and it is socially how valuable you know well, है ना. Whereas graphite की बात करते हैं तो graphite is also used as a lubricant करके because we have hexagonal rings of carbon are there one above the other and that's why it can act as a lubricant. There are hexagonal rings of carbon atom and that's why it shows the lubricating properties and that's why graphite is also can be used as a lubricant. Whereas this fullerene which has the soccer ball like structure, football like structure होता है जिसके अंदर pentagonal hexagonal rings होते हैं and here when this fullerene is treated with sodium के साथ उसे अगर हम लोग ट्रीट करते हैं तो सोडियम C60 पोटेशियम के साथ मिक्स करेंगे तो पोटेशियम C60 सोडियम के साथ मिक्स करेंगे तो सोडियम 660 इस टाइप का मॉलिक्यूल मिलता है. जनरली पोटेशियम के साथ मिक्स करके वो तैयार होता है और इसका जो मॉलिक्यूल है C60 से लेकर C250 तक होता है. मॉलिक्यूल मतलब फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं तो C60 से लेकर C250 तक उतने कार्बन उसके अंदर हो सकते हैं and that is you can say fullerene and that is combined with potassium sodium can be used as a superconductor करके उसे यूज किया जाता है. मतलब conductivity increases millions time. See how is the conductivity that matters over here and that conductivity increases by millions times when we have the fullerene. So this is what you can say. This is the difference between this covalently bonded compounds. You can say or covalent compounds के तीन examples है graphite, fullerene and diamond. You can say. Remember this. Another one is remaining. There you can say metal, but we'll discuss in tomorrow's lecture. Remember this. So thank you very much. See you tomorrow with the next topic related with this chapter. So thank you very much.